welcome you all to the Facebook Live sessions which are being organized by NCID IGNOU. The Facebook Live sessions are a series of sessions on innovation, entrepreneurship, startup for IGNOU students and faculty members, covering different topics of common interest as an activity of Azadi Ka Amrit Mahotsav. The program aims at encouraging and motivating IGNOU students towards innovation, entrepreneurship, and startup. The title of today's session, which is the 37th session, is Importance of Trademark for a Startup. The expert for today is Dr. Suneet Srivastava, Director, School of Law, IGNOU. I welcome you, Dr. Suneet Srivastava. Dr. Suneet Srivastava has done her law degree from Banaras Hindu University, Varanasi. She has been a topper in LLB and has secured a first class throughout her academic career. She specializes in criminal law, IPR, family law, cyber law, and human rights. She has been connected with NCID and has been involved in various training programs and lectures for on IP for the products being offered and the services being offered. I welcome you, Dr. Suneet, and invite you for the session. Thank you very much, Sujata. So I will start with the topic which has been given to me, which is trademarks, importance of trademarks in startups. As you know, trademark is actually an IPR, and I'll be bilingual. Trademark, why do we require a trademark? जब हम startups की बात करते हैं या business enterprises की बात करते हैं, तो why do we require a trademark? What is the importance of trademark? So in my session, I will emphasize on the importance of trademark, the need of a trademark for a business enterprise or a startup, and how do we get it registered? अगर हमने एक trademark बनाया है, लिया है, तो how we will get it registered, how to acquire a trademark, the importance of trademark, and if there is an infringement of trademark, हम उसको कैसे अपने trademark को protect कर सकते हैं. So I will be dealing with all those issues. सबसे पहले, let us understand what is trademark and what is the importance of trademark in a business enterprise, for a business enterprise. So जो भी चीजें हम आसपास देखते हैं, whatever we see in today's life, a trademark has become very important. Trademark, ट्रेड का मतलब होता है जब आप कोई बिजनेस की बात करते हैं, ट्रेड से रिलेटेड कोई चीज और उसके साथ एसोसिएशन विद अ मार्क, that is known as trademark. It has become a facet in everyday life. We see and hear hundreds of trademarks each day. जैसे कि हमारा नाम है जो है वो अपने मुझे किसी और से डिस्टिंग्विश करता है. Though we have several people of the same name, but people who are knowing me, जो मेरे साथ एसोसिएटेड है, वो मुझे ऑफ कोर्स मुझे डिस्टिंग्विश करते हैं बिकॉज ऑफ माय नेम. सिमिलरली अ ट्रेडमार्क किसी भी चीज को, किसी भी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करता है उसके ओरिजिन से, उसके क्वालिटी से, उसके एसेट से उसको डिफरेंशिएट करता है. एंड दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अ ट्रेडमार्क, एंड दैट इज व्हाई वी रिक्वायर अ ट्रेडमार्क. तो किसी भी एंटरप्राइज को, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को, जैसे कि हम जानते हैं कि वी आर टॉकिंग मेनली अबाउट स्टार्टअप्स एंड द स्टूडेंट्स हु आर हियर हु आर एसोसिएटेड विद अस, they want to do a startup. तो उनके लिए इंपॉर्टेंस क्या है ट्रेडमार्क का, उनको एक ट्रेडमार्क की क्या जरूरत है. ट्रेडमार्क इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद गुडविल. अगर आप किसी ट्रेडमार्क को यूज करते हैं, कुछ बार बार आप उसको यूज करते हैं, इसके मतलब आप उसकी क्वालिटी को पहचानने लगे हैं. तो इसीलिए आपको एक ट्रेडमार्क की जरूरत है. और मैं ज्यादातर जब भी ट्रेडमार्क का सेशन लेती हूँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में, तो मैं इग्नू का एग्जाम्पल जरूर देती हूँ. बिकॉज आप जब देखते होंगे कि इग्नू का जो लोगो है, इट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रेडमार्क. कोई जरूरी नहीं है कि इग्नू हम बोले कि हम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का ये ट्रेडमार्क है या फिर ये लोगो है. द मोमेंट जन जन का विद्यालय, जो कि एक फ्रेज है, और द मोमेंट दैट लोगो कम्स इन, आपको समझ में आ जाता है कि इट इज अ यूनिवर्सिटी एंड इट इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी. तो क्वालिटी के
वजह से भी हम जानते हैं इग्नो को। उस ट्रेडमार्क को सिर्फ बताने की जरूरत नहीं, जन जन का विश्वविद्यालय जैसे ही हम बोलते हैं आपको समझ में आ जाता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। सो दिस इज द रोल ऑफ अ ट्रेडमार्क एंड दिस इज एन आईपीआर। ये दो तरीके से आपको फैसिलिटेट करता है। पहला तो ट्रेडमार्क इज अ आईपीआर, जिसने बनाया, he or she can take say that this is my IPR, this is my creation, and take a protection of that under the Trademarks Act. और दूसरा, जो बिजनेस एंटरप्राइजेस को यूज कर रही है वो इसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है कि कोई और इसके ट्रेडमार्क को इमिटेट ना करे, तो भी वो ट्रेडमार्क इतना इंपॉर्टेंट होता है। नाउ आई शो यू सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। Now, as I told you, trademarks are facets of everyday life. We see and hear hundreds of trademarks each day. As our name identifies and distinguishes us, the main purpose of a trademark is to identify the source of a product and to distinguish that product from products which are coming from other sources. तो अगर आपने कुछ अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जिसकी वजह से आपने अपना एंटरप्राइज खोला हुआ है, आपने अपना स्टार्टअप किया है, तो आपके प्रोडक्ट को वो कैसे डिस्टिंग्विश करेगा किसी और से, वो आपका ट्रेडमार्क बताएगा। अगर आपका प्रोडक्ट जो है इट इज वेरी वेरी इट इज हैविंग अ हाई क्वालिटी और इट इज हैविंग आई मीन यू वांट इट टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर प्रोडक्ट, तो आपको एक ट्रेडमार्क की जरूरत है। So when we come to the needs of trademarks, trademarks are source identification function, they are quality function, they are advertising function, they are expressive function and merchandising function. So what is meant by source identification function? पहले के जमाने में जब हम देखते थे कि एक विलेज इकोनॉमी में कंज्यूमर जो था वो अपने प्रोड्यूसर को जानता था, उसको अगर कुछ खरीदना था तो ही न्यू दैट ही इज इंटरैक्टिंग विद अ पर्सन, अपने शॉपकीपर से, अपने प्रोड्यूसर से, जो भी जिससे भी वो खरीदता था उसको मालूम था कि ही इज द पर्सन, ही इज द सोर्स। बट आज के जमाने में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट हु इज द व्हाट इज द सोर्स फ्रॉम विच आई एम गेटिंग दिस प्रोडक्ट और सर्विसेज। क्योंकि आप ट्रेडमार्क को सिर्फ प्रोडक्ट के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं, सर्विसेज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ जब हम बिजनेस एंटरप्राइजेस की बात करते हैं तो आप किसी भी प्रकार का अगर सर्विसेज दे रहे हैं तो भी आप एक ट्रेडमार्क की आपको जरूरत होती है। तो विद द advent of concentration of production capacity in larger units, what happened? The developments of distribution of goods to the consumer also it became a very large thing. और अब this thing actually led to the emergence of modern use of trademarks as a source and origin identifier. And because of the loss of the personal connection, because there was a loss between the personal connection between the producer and the consumer, it is very important that there should be something, for example, the trademark for the source identification function. So thus it is because of the need of a source identification function, we need a trademark. Second, quality function. ट्रेडमार्क को जब हम समझते हैं तो बार बार आप किसी चीज को क्यों खरीदते हैं, या फिर बार बार आप किसी जगह क्यों जाते हैं, किसी प्रोडक्ट को अगर आप लेते हैं, because of it the quality which is associated with it. That is why we say it also works as a quality function. अब कोई जरूरी नहीं है कि आपने कोई ट्रेडमार्क लिया है या फिर आपने फ्रांचाइजी, जैसे आप फ्रांचाइजी की बात समझते हैं तो I should not give an example of any because I'm not selling a product or I'm not promoting a product, but still अगर आप एग्जाम्पल देखिए मैकडोनल्ड्स का, तो मैकडोनल्ड्स कोई जरूरी नहीं है कि आप जितने भी मैकडोनल्ड्स के आउटलेट्स हैं वो सारे जो है आई मीन द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट जो है, जो वहां का खाना जो बनता है वो एक ही पर्सन बना रहा है या फिर एक ही आदमी मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई जरूरी नहीं है, बट इट इज द फ्रांचाइजी। तो जो क्वालिटी फंक्शन उससे एसोसिएटेड है उसके लिए हमें ट्रेडमार्क की जरूरत है, जो कि मैकडोनल्ड्स है। तो उस मैकडोनल्ड्स के तहत जो क्वालिटी फंक्शन अगर आपने बरकरार नहीं रखा तो डेफिनेटली द ट्रेडमार्क जो मैकडोनल्ड्स के जो ओनर है वो आपको उस फ्रांचाइजी से हटा सकते हैं। तो क्वालिटी फंक्शन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द ट्रेडमार्क्स एंड दैट इज वाई
आप अपनी क्वालिटी को दिखाने के लिए आप किसी ट्रेडमार्क की आपको जरूरत है. The third and important need for a trademark is the advertising function. Now we know with the industrialization and the growth of the system of the market-oriented economy, there is a lot of competition between the manufacturers and traders to offer consumers a variety of goods, which is of the same category. So often without any apparent differences of the consumer, they generally differ in quality, price, and other characteristics. So now the consumers, they need to be given information and guidance that my particular product is very good, or this particular product, हमारे इस product के क्या क्या beneficiaries है, benefits है. So definitely advertising is also an important part of trademark, and that is why we require a trademark. So advertising के जरूरत से भी हमें ट्रेडमार्क की जरूरत है. जब आप एडवर्टाइज करते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी चीजें बोलते हैं, बताते हैं आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कि हमारे प्रोडक्ट में ये भी है, हमारे प्रोडक्ट में दो, आपको मालूम है कि मार्केट में सेम तरह के प्रोडक्ट्स हैं, बट आपका एडवर्टाइजिंग, आप जब एडवर्टाइज करते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट को दिखाते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स में ये भी चीजें हैं, ये भी चीजें हैं, इट इज हैविंग दिस ऑल्सो, इट इज हैविंग दैट ऑल्सो, एंड दैट इज व्हाई यू शुड बाय माय प्रोडक्ट. सो एडवर्टाइजिंग के को लेते हुए भी आप you will require a trademark. The fourth very important thing is the expressive function. आजकल के यूथ को आप अगर देखिए, if you see the world around, we are very expressive with the things which we buy. For example, we always like to buy things which are very very costly, क्योंकि हम अपने आप को उससे associate दिखाते हैं. I always buy the products of this company or of this trademark or of this brand. So why do we do that? Because we want to be associated with that trademark. We want to show that we, या तो आप अपने आप को दिखाते हैं कि मैं बहुत classy हूँ, मैं बहुत standard, I belong to a particular standard. So that is why you try to express yourself, and that for that reason we also require a trademark. So it also serves as an expressive function. The next is the merchandising function. Now with the advent of further advancement in modern commerce, the trademark, it identifies the trader, and it has become now a merchantable commodity. So a student or a child, आपका खुद का बच्चा अगर आता है और कहता है मम्मा मुझे इस तरह का वाटर बॉटल लेना है या इस तरह की टिफिन लेनी है जिसमें एक पर्टिकुलर कार्टून कैरेक्टर है, so why do that why the child wants that particular tiffin or particular water bottle or this with a specific cartoon? Because he or she has made it as a source of that product as a source of quality, और उसको मालूम है कि ये quality product है which has been used by his peer group, and that is why the particular product has become a merchandising function, and that is the need, that is how we require the need of a trademark is understood. So we can see now the trademarks, the functions and needs of a trademark are, it works as a source identification function, it works as a quality function, it works as an advertising function, it works as an expressive function, and also as a merchandising function. Source identification function because we want to know the source, quality function because we want to say that it is having so and so quality, advertising function because we want to, through the advertising, we want to express, we want to say that these are the benefits which you get if you buy our product. And expressive function, we want to be associated with the function. And now it has become a merchandising function because it doesn't require an identity itself. It is itself a merchandising function. It is itself a merchandising commodity. Also, trademark has become a business asset. Nowadays, the intangibles which you say, especially the brand names, the trademarks, they have become the most valuable asset for an increasing number of companies. And in many cases, you will see that the brand value, it exceeds the value of the physical assets of a company. So we can say that trademark has also become a business asset. Now, talking much about the needs of a trademark, we need to define what is a trademark. Trademark की definition, trademark अगर आप definition देखेंगे तो the law which is associated with trademark is the Trademarks Act 1999,
which is being followed in India. Our Section 21ZB defines a trademark. According to Section 21ZB, trademark means a mark which is capable of being represented graphically and which is capable of distinguishing the goods or services of one person from those of the marks of others, and may include shape of goods, their packaging, and combination of colors. So let's see what are the essentialities of a trademark. The trademark must be a mark. अब जब हम मार्क की बात करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि क्या किसी भी तरीके का मार्क को हम ट्रेडमार्क कह सकते हैं. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ ट्रेडमार्क इज दैट क्या कोई भी ट्रेडमार्क, किसी भी चीज को हम ट्रेडमार्क के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस वेंचर के लिए, अपने बिजनेस एंटरप्राइज के लिए. तो वही मार्क्स जो कि सेक्शन 21M ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट के तहत आता है, उन्हीं मार्क्स को हम ट्रेडमार्क के रूप में यूज कर सकते हैं, विच इंक्लूड्स अ डिवाइस, अ ब्रांड, a heading, a label, ticket, name, signature, word, letter, numeral, shape of goods, packaging, or a combination of colors or any combination thereof. So any mark which comes under the purview of section 21M can be considered as a trademark. So trademark can be a mark. Second important essentialities of a trademark is that it must be capable of being represented graphically. So anything which can be represented, which is capable of being represented graphically can be a trademark. It should be a mark. It should be capable of being represented graphically. आप उसको पिक्चर में दिखा सकते हैं ग्राफिकली. इट में बी 2 डायमेंशनल और इट में बी 3 डायमेंशनल, जिसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. So the selection of a graphic representation is very important for any applicant who's asking for a trademark, as graphic representation is why it is necessary, because when you go for an application, you have to show that it is this is the diagram or this is the graphically representation of my trademark. तो उस पिक्चर को आप दिखा सकते हैं कि हाँ, it is a 2-dimensional or a 3-dimensional, and it can be, and this is my trademark. The third important essentialities of a trademark is that it must be capable of distinguishing. So this is a basic requirement of a trademark, that it should be capable to your goods should be, you can distinguish the goods or services of your goods or services with some other goods and services. तो आप उसमें डिस्टिंक्शन बना सकते हैं. अगर आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि आपके goods कैसे अलग हैं, तो then you cannot get a trademark. So it should be, the trademark must be capable of distinguishing that your goods is different from the products which is already available in the market. तो ये एक important aspect है, essentialities है for a trademark. The fourth is a trademark is for goods or services only. So other than goods or services, you cannot apply for a trademark. अगर आप किसी goods को और products को बेच रहे हैं, तो उसके लिए ही trademark होता है. और also services. So if your business venture is for your giving any type of services, for example, a lawyer's collective marks of a collection of lawyers are 4 or 5 lawyers, they're giving some type of services. So उनको भी एक ट्रेडमार्क, वो भी अपना एक ट्रेडमार्क यूज कर सकते हैं. और कभी कभी हम उस ट्रेडमार्क को सर्विस मार्क भी बोलते हैं, because we are giving services, so we say it a service mark or a trademark because you are giving services. Now, having known what are the essentialities of a trademark, that trademark must be a mark, trademark must be capable of being represented graphically, trademark must be capable of distinguishing, and trademark is for goods or services only. Now we come to what are the different types of trademarks. So when we try to categorize trademarks, जैसे मैंने बताया कि marks है, तो it should be words, letters and numerals. आप बहुत सारे ट्रेडमार्क्स देखते होंगे जो कि सिर्फ वर्ड्स हैं, जो लेटर्स हैं, जो कभी कभी एक न्यूमरल्स है, कभी कोई साइन भी है, डिवाइस है, शेप्स है, किसी तरीके का लोगो है, जैसे हमारे अपने इग्नो का लोगो, इट इज द लोगो. और इवन साउंड मार्क्स, कलर मार्क्स, olfactory marks. Olfactory marks means smell marks. And
collective marks. These all are types of trademarks. जब आप वर्ड्स, लेटर्स एंड न्यूमरल्स की बात करते हैं तो इसमें सरनेम्स भी आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आपने एप्पल या मारुति या कोई फ्रेज आपने यूज किया, ये दिल मांगे मोर. So this type of trademarks can be also be used. You are using a phrase, words, letters, and numerals, anything, or a phrase also. You can also use a phrase. Devices and shapes की जब हम बात करते हैं तो it is the shape of goods which results in the nature of the goods themselves. कभी कभी क्या होता है कि आपका जो goods है उसका shape इस तरीके से हो सकता है कि वो ही एक trademark है, वो डिस्टिंग्विश कर रहा है. उसकी जो शेप है, उसका जो डिवाइस आपने यूज किया वो उसका शेप इस तरीके से है कि वो आपको itself is making a trademark. So it is distinguishing it from the other products which are there in the market. A logo is always a different logo. Even sound marks. Now the tree tone of NBC and the ICICI's jingle, it is making it is a registered trademark. So these are the sound marks which are also a type of trademark. Color marks, कभी कभी क्या होता है कि combination of colors आप यूज करते हैं और वो कलर ही आपका ट्रेडमार्क बन जाता है. उस कलर को देखते ही आप पहचान जाते हैं कि इट इज दिस ब्रांड और इट इज दैट ब्रांड और इट इज दिस प्रोडक्ट. ये इस प्रोडक्ट को स्पेसिफाई करता है. उसी प्रकार से ऑल्फैक्टरी मार्क्स और द स्मेल मार्क्स, किसी तरीके का फ्रेग्रेंस, उस फ्रेग्रेंस को स्मेल करके आप बता सकते हैं कि दिस इज दैट प्रोडक्ट और दिस इज दिस प्रोडक्ट. उसका फ्रेग्रेंस ही उसका ट्रेडमार्क होता है. और कलेक्टिव मार्क, कलेक्टिव ऐसा मार्क होता है जिसका कंप्लीट, जिसको देख करके आप कहते हैं कि दिस इज अ पर्टिकुलर ब्रांड. सो यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ ट्रेडमार्क. नाउ वी कम टू द एक्विजिशन ऑफ ट्रेडमार्क. What is the need? How the trademark can be acquired? So either the trademark can be acquired on the basis of either use or registration. ट्रेडमार्क को आप एक्वायर भी कर सकते हैं और ट्रेडमार्क को आप यूज भी कर सकते हैं. तो अगर आप किसी भी ट्रेडमार्क को बहुत सालों से यूज कर रहे हैं, when you're using it for a very long time, so it becomes a part of your trademark. It becomes a part of your product. तो उस प्रोडक्ट को जब आप पहचानते हैं तो आप अपने यूज के कारण ही पहचानते हैं, उसके यूज के कारण पहचानते हैं. इट इज नॉट नेसेसरी इन इंडिया, रजिस्ट्रेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन रजिस्ट्रेशन के भी कुछ एडवांटेजेस होते हैं. तो वी विल नो द एडवांटेजेस ऑफ रजिस्ट्रेशन. बस ये जान ले कि किसी यूज को अगर आप, किसी चीज को अगर आप यूज करते आए हैं, उस ट्रेडमार्क को अगर आप यूज करते आए हैं, दो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो क्या आप उसको ट्रेडमार्क कह सकते हैं, अपना ट्रेडमार्क कह सकते हैं? Acquisition of trademarks rights. चला गया वो उसमें. तो आगे नहीं जाए ये है ना. कोई बात नहीं, इसको ऐसे रखिए, आगे कर लूंगी. हाँ आगे तो ऐसे. ऐसे ऐसे आगे हो रहा है, कोई बात नहीं. So we are coming to the acquisition of trademark rights. Trademark rights, they can be acquired on the basis of either use or registration. If you've been using the trademark for a very long time, so अगर आप use कर रहे हैं उस trademark को बहुत दिनों से, तो भी आप कह सकते हैं कि because you've been using that trademark, you can say that this is my, you can protect yourself. And sometimes what happens that the registration is also very important because we have advantages of registration. So the use system is based on the objective fact of trademark use and decides the ownership of a trademark according to the time that the trademark was first used.
if somebody has infringed you or somebody is using your trademark, तो उस टाइम पे आपको ये दिखाना पड़ेगा कि मैंने पहले यूज किया हुआ है एंड आई बीन यूजिंग दिस ट्रेडमार्क फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. कई बार क्या होता है कि people try to imitate your product and that is why they go for a registration. You've been using your product for a very long time, you've been using that trademark for a very long time, but somebody has gone for a registration of the same trademark which you have been using. तो उस टाइम में बहुत जरूरी होता है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तब तो आप उसका इन्फ्रिंजमेंट कर सकते हैं, वो रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता, किसी और को नहीं मिल सकता. लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि यू बीन यूजिंग दिस ट्रेडमार्क फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो दैट इज व्हाई वी से दैट देयर आर सम benefits of registration. So it is said that while the registration system grants trademark rights according to the registration and the first applicant will obtain the trademark right, both systems have developed historically. However, here you see that the use system predates the registration system. So throughout the world, you see that the trademark protection system today is generally combined both the elements of use and registration. So अगर आपने registration नहीं भी कराया है पर आप बहुत सालों से उसको यूज कर रहे हैं, तो यू कैन, इफ यू प्रूव योर दैट यू बीन यूजिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, nobody can infringe your trademark right. But it is always nice to get your trademark registered. That is why it is important to go for a registration. So what are the advantages of registration? Trademark registration, it brings forth following advantages. Registration usually gives a party the right to use the mark nationwide, whereas unregistered trademarks can acquire rights only in the territory in which it is used. So अगर आपने registration करवाया हुआ आपने trademark का, तो आप उसको throughout the world use कर सकते हैं अपने trademark को. लेकिन अगर आप सिर्फ use कर रहे हैं उस trademark को for a long time and आपने उसको register नहीं करवाया है, why? Then you can use it only in that territory because it is well known in that territory. It is not known in other parts of the country. But if somebody uses your trademark in other nations, then it will become very difficult for you to protect yourself because the burden of proof will always be on you to show that you have been using this trademark for a very long time. तो कोई भी आपका एडवांटेज ले सकता है, आपके ट्रेडमार्क को यूज कर सकता है कहीं किसी और कंट्री में, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ है और आपका प्रोडक्ट अगर वो क्वालिटी प्रोडक्ट है and it has been it has a very good clientele, तो वहां आपको you have to suffer there. So that is why there are advantages of registration and you should go for a registration. अगर आपका बिजनेस जो है बहुत big turnover है उसका और आपने and you're using, it has a very big turnover, at the same time it is being very wide and people you have a big clientele also, so you should always go for a registration. Since registration constitutes nationwide constructive notice to others that the trademark is owned by the party. So here everybody comes to know that this is being used by this party only, and so nobody can misappropriate your trademark. The third important thing is that registration enables a party to bring an infringement suit, whereas the owner of an unregistered trademark has the remedy of passing off alone. Passing off alone मतलब आप सिर्फ ये दिखा सकते हैं कि it has been by usage, आप दिखा सकते हैं कि I've been using it for a very long time and by that आप अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं. पर कई बार क्या होता है कि you have been using for a very long time, but आप अपने आप को since the burden of proof is only on you to prove कि I've been using, तो वहां पर आप कभी-कभी there will be a benefit of doubt. कभी आपको फायदा भी मिल सकता है और कभी at the same time when you're unable to prove yourself that you've been using for a long time, और अगर आपके पास कोई proof नहीं हो तो उस समय आपको it becomes a disadvantage for you. In all legal proceedings, you say, relating to a registered trademark, the registration of trademark shall be prima facie evidence of the validity thereof. And the fourth is that registered trademarks can, after 5 years, become incontestable, at which point the exclusive rights to use the mark is conclusively established. When the proprietor of an earlier trademark has acquiesced for a continuous period of 5 years in the use of a registered trademark, being aware of that use, he shall no longer be entitled on the basis of that earlier trademark to apply for a declaration that the registration of the later trademark is invalid.
or to oppose the use of the later trademark in relation to the goods or services in relation to which it has been so used. So unless the registration of the later trademark was not applied in good faith. तो यहाँ देखिए, यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि अगर आप यूज कर रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है कि किसी ने आपके नाम से रजिस्ट्रेशन, आपके सिंबल को या फिर आपके लोगो को ट्रेडमार्क कराया है कहीं और, एंड दैट पर्सन हैज यूज्ड इट फॉर 5 years, वो उसने यूज किया है बहुत, और 5 सालों के बीच में आप कभी आपको पता ही नहीं है कि दैट पर्सन इज यूजिंग, देन यू कैन नॉट से कि आई डू नॉट नो और दैट पर्सन हैज डन इन गुड फेथ, बिकॉज दैट पर्सन इज डन इन गुड फेथ. आप उस समय आप कुछ भी नहीं कर सकते. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाइए और अपने आप को प्रोटेक्ट करें. Now we come to the duration and renewal of trademark. So why it is important for the renewal, उसके बारे में भी हम जानेंगे. पहले duration of trademark. You cannot keep a trademark for perpetuity without giving a fee. So the duration for a trademark is for a period of 10 years. अगर आप कहीं अपने ट्रेडमार्क को रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 10 years आपको रजिस्ट्रेशन का राइट्स है आपके पास, एंड यू कैन यूज द ट्रेडमार्क फॉर 10 years. बट इफ यू वांट टू कंटिन्यू द ट्रेडमार्क, आप उस ट्रेडमार्क को यूज करना चाहते हो, सिंबल या लोगो या जो भी आपका मार्क है उसको अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यू हैव टू गो फॉर अ रिन्यूअल. And it then for a renewal, what happens? You have to pay a fees, a stipulated fees, which is given to, which is there. You have to pay that fees. So one of the reasons for imposing such time limit for the trademark office is that it is also a source of revenue for the office, for the trademark office, and that is why they say that कि आपको renewal के लिए fees देनी चाहिए. और अगर आप कभी-कभी ऐसा भी होता है कि you don't want that trademark anymore, आपका business जो है वो नहीं चल पाया, या फिर अब आप उस ट्रेडमार्क से एसोसिएट नहीं होना चाहते हैं, इट इज नॉट गिविंग अ वेरी गुड बेनिफिट, इट इज नॉट गिविंग एनी गुड बेनिफिट टू यू, तो आप क्या कभी-कभी क्या होता है कि यू वांट टू विथड्रॉ दैट ट्रेडमार्क और यू डोंट वांट दैट टू कीप दैट ट्रेडमार्क. तो इसलिए 10 years इज अ टाइम, अ स्टिपुलेटेड टाइम व्हिच हैज बीन गिवन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ अ trademark, is considered as a duration of a trademark. And after the 10 years, what you should do, you should go for a renewal if you think that your business is doing very well and you require the trademark. And if you are not renewing it, then of course you become a defaulter. तो उस समय अगर आपके ट्रेडमार्क को किसी ने और इस्तेमाल किया तो आप अगेन यू विल कम, यू हैव टू शो दैट बिकॉज इट यू आर बीन यूजिंग इट फॉर विद अ फाइन. फॉर एग्जांपल कभी-कभी क्या होता है कि ट्रेडमार्क एंड रजिस्टर्ड जो ऑफिस है वो आपसे फाइन लेती है कि तभी हम आपको ट्रेडमार्क रिन्यू करने के लिए देंगे क्योंकि आपने ट्रेडमार्क रिन्यू नहीं किया है. कई बार ऐसा होता है कि बड़े-बड़े बिजनेस एंटिटीज ये सोचते हैं कि नाउ इट हैज बिकम अ ट्रेडमार्क, सो वी शुड नॉट गो फॉर अ रिन्यूअल. बट दिस इज द fault which they are doing. They should always go for the renewal of a trademark. Coming to the rights of a trademark, the rights which are originating from a trademark registration. The rights arising from trademark registration are, first is the right to use the trademark. क्योंकि आपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर किया है तो नाउ यू हैव बिकम एन एक्सक्लूसिव ओनर. Though it is a negative right, but still now ये right इसलिए आपको दिया गया है कि now you will exclude the anyone else from using that trademark. So the registered owners has the exclusive right to use the trademark. It would indeed be contradictory not to grant such a positive right of use while imposing an obligation to use. Now the right of use is however subject to other laws and rights, as is the case with any other right provided by law. The right to use means that the right of the proprietor of the mark to affix it on goods, containers, packaging, labels, etc., or to use it in any other way in relation to the goods or services for which it is registered. It also means the right to introduce the goods to the market under the trademark. Now, when you are saying, this provision is the right to use the trademark, तो इसका ये मतलब है कि आप इस ट्रेडमार्क को आपको यूज करना है. अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं किसी भी चीज का, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और आप उस ट्रेडमार्क को नहीं यूज करते हैं, देन यू हैव टू बेयर द पेनल्टी फॉर दैट. बिकॉज वो फिर क्या करेंगे कि वो आपसे उस ट्रेडमार्क को वापस ले लेंगे. They will withdraw the trademark. So it is the right to use has got pros and cons of it. If you are not using it,
you can use it exclusively because that is a right which has been given to you to use it. And if you're not using that right, that right can be, that is why they are saying that this right is a positive right to you for the person who is acquiring the trademark to use it. And if you're not using it, then what will happen? We will also see that then what will happen. Since the right is to exclude others from using the mark, and the right is granted to the proprietor of a registered trademark, it is an exclusive in nature, meaning that if he has the right to exclude or restrain all others from using the mark without his permission. It also follows from the mark's basic function of distinguishing the goods of its owner. So the reason why because आपको ये trademark मिला है, आपके goods को ये आप distinguish कर सकते हैं अपने goods को कि इसकी quality अच्छी है, इसका क्या है, इसमें क्या benefits हैं, ये सारी चीजें आपको करनी है. And if somebody is using a trademark आपसे बिना पूछे, तो what will happen? Then you can bring an infringement to आप उस खिलाफ एक infringement action ला सकते हैं. इसीलिए ये right आपको दिया गया है कि आप किसी और को use नहीं करने दें. But at the same time, this right also has, since it is saying that it is excluding others from using the mark, आपको इस right को एक particular timing के, for example, आपको ये कोई time limit है, उस time limit के within 5 years अगर आप नहीं use करते हैं, तो आपके इस right को withdraw कर देता है trademark office और आपसे ये right छीन लेता है, और then it has the right to give it to some other person, whoever is applying for it. Now we come to the procedure for registration of trademarks. तो आप में से बहुत सारे लोग जो स्टार्टअप्स के लिए सोच रहे हैं या फिर जो किसी बिजनेस एंटरप्राइज के लिए सोच रहे हैं फॉर एनी प्रोडक्ट विच दे हैव, वो ये सोच रहे हैं और अब उनको ये भी जानकारी मिल गई है कि ट्रेडमार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ट्रेडमार्क से आप एडवर्टाइज कर सकते हैं, आप अपने गुड्स के बारे में लोगों को बता सकते हैं, बिकॉज इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ गुड विल और इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ expressive function. It is also acting as a source identification function. आपका जो trademark है, तो आप इसको कहाँ जाकर के कैसे आप what is the procedure for registration of trademark? If you want to know, if you want to go for a registration of trademark, आप कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए जरूरी है कि आप एक एप्लीकेशन दें और ये एप्लीकेशन आप the proprietor जो है, the person who is claiming to be the proprietor of the trademark is entitled to obtain a registration by filing a request in the prescribed manner and by paying the requisite fee. जो भी fee है trademarks के registration के लिए, उसको pay करने के बाद आप एक application, registration का application दे सकते हैं, और ये आप trademarks registration office जो पेटेंट ऑफिस है, उसी में आपका ट्रेडमार्क की रजिस्ट्री भी है, ट्रेडमार्क ऑफिस भी है, वो ट्रेडमार्क्स, वहां पर आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं विद द रिक्विजिट फी. नाउ द एप्लीकेशन, इट हैज टू बी फाइल्ड इन द ऑफिस ऑफ द ट्रेडमार्क रजिस्ट्री within whose territorial limits the principal place of business of in India of the applicant, or the case of joint applicants, अगर आप joint applicants हैं या फिर आपका कोई एप्लीकेंट, आपका कोई बिजनेस पार्टनर जो कहीं बाहर रह रहा है, तो एक पर्सन होना चाहिए उस who is using the product or who is selling the product in this country. कम से कम एक, अगर आप joint है तो आपका एक, there should be one person who is using this product, who is selling this product in India. तो आप टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन देख करके, फॉर एग्जांपल आपका जो, अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं या दिल्ली के आसपास के कुछ इलाके हैं जहां पर आपका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, आप उसी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में जाकर के आप एप्लीकेशन दे सकते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन. नाउ जब आपने एप्लीकेशन दिया है रजिस्ट्रेशन के लिए विद द रिक्विजिट फी, द रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेडमार्क वो आपके एप्लीकेशन को एग्जामिन करेंगे, और अगर उनको लगता है कि आपका ट्रेडमार्क जो है वो जेन्युइन है, तो वो he can give you he can accept your application, or he can also withdraw his acceptance. The second important thing is that when you're given an application for registration is the advertisement and opposition. So if you have filed an application, your application will be advertised in the trademark journal by the registrar
together with whatever conditions and limitations are there, and subject to if it has been accepted. The first thing is that if you're giving an application, doesn't mean that they are accepting your application. If they find that the application is genuine, then they will accept that application. And then the second is they will advertise it in the trademark journal. So with the conditions and limitations, and this advertisement which they will be giving in the journal, it will be to the public, so that there may be if there is any opposition for the registration process, then फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है कि आपने जैसे मैंने बताया कि कोई क्या होता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ यूज ऑफ द थिंग, किसी प्रोडक्ट का यूज हो रहा है और किसी ने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए दे दिया, उनको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट बहुत यूज हो रहा है, तो मैं ही क्यों ना, क्योंकि इनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो मैं ही रजिस्ट्रेशन करवा लेता हूँ जाकर के। तो ये जो जर्नल में नॉर्मली जर्नल में हम जब देते हैं आपके एप्लीकेशन को एडवर्टाइज किया जाता है जर्नल में, इसी पर्पस से एडवर्टाइज किया जाता है कि अगर किसी पर्सन को ये लगता है कि हम ये इट इज बीइंग इन यूज और वो अपोज करना चाहते हैं, तो दे कैन कम एंड अपोज दैट। सो विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि एडवर्टीजमेंट होता है, द पर्सन कैन अपोज। एंड if any person within 3 months from the date of the advertisement of an application for registration oppose करते हैं, तो फिर and if a person thinks that there is some opposition, तो फिर again the trademark registrar will examine that whether the opposition is valid or not, and if अगर उनको लगता है कि ये opposition सही है, the trademark is in use and the person who is using it has proved it that it has been in this particular territory, they have been using this trademark for a very long time, तो वो उस trademark को वो accept, उस opposition को accept नहीं कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर उनको लगता है नहीं ये जेन्युइन है, उनके एडवर्टीजमेंट पर कोई ऑपोजिशन नहीं आता है, then they will give a then they will register the trademark. So when an application for registration of trademark gets accepted, and either it has not been opposed by anyone, or if the opposition is there but within the stipulated period of time, and the person who's been using it और जिसने भी एप्लीकेशन दिया हुआ है वो जेन्युइन एप्लीकेशन है, तो फिर क्या, देन द रजिस्ट्रार विल रजिस्टर द सेड ट्रेडमार्क। अगर उनको लगता है कि ये एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द ट्रेडमार्क इज जेन्युइन, तो वो रजिस्टर आपके एप्लीकेशन को रजिस्टर करेगा, आपके ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर लेंगे अपनी ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में। उनके पास एक रजिस्टर होता है जिसमें वो ट्रेडमार्क को रजिस्ट्रेशन करेंगे। So after the registration of the trademark, the registrar will then issue to the applicant a certificate of registration, which is sealed with the seal of the trademark registry. उसका आप देखेंगे कि कई बार जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें एक लोगो होता है, एक राउंड और आर, दैट मीन्स अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। सो बहुत सी चीजों में आप यू विल सी दैट अ स्मॉल राउंड, जस्ट फॉर एग्जांपल कॉपीराइट के लिए आपने देखा होगा कि सी बना होता है, एक राउंड के साथ एक सी बना होता है, उसी तरीके से ट्रेडमार्क के लिए आर होता है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और एक राउंड बना होता है। That is how that your trademark is registered. And since the moment you get the registration, the proprietor's exclusive rights exist from the date of registration. जिस दिन से आपको registration मिलता है, आपके proprietor होता है, जो आप जिसने application दिया हुआ है, his right exists from the same date. Now the trademark, when it is registered as the date of making, जिस दिन date of registration आप करते हैं उसी date से आपका registration को valid माना जाता है। And finally, the publication and access to the registration. This is also very important for owners of prior rights and the public, that all relevant data which is contained in the register concerning the applications, the registrations, the renewals, and the change of name, address, and ownership, it should all be published in an official gazette. ये सारी चीजें जो है ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो जाती है, ताकि जो भी उससे रिलेटेड है, जो कंसर्न रिलेटेड है, चाहे वो कंज्यूमर ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, वो उनको इसकी जानकारी हो जाए, एंड इट विल एनेबल द ओनर ऑफ प्रायर राइट्स टू टेक नेसेसरी स्टेप्स व्हिच इज इंक्लूडिंग द ऑपोजिशन। तो अगर उनको लगता है किसी ने एक पुराना ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने की कोशिश की, तो दैट इज व्हाई द पब्लिकेशन इज देयर। इट इज आल्सो नोन टू द कंज्यूमर्स, द कंज्यूमर्स सी दैट गैजेट, उनको भी पता चलेगा कि ये रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है, या फिर दिस इट इज अ फ्रॉड रजिस्ट्रेशन, और उसका ऑपोजिशन हो सकता है फिर आकर के, और एंड द ट्रेडमार्क कैन बी कैंसल्ड। सो देन यू सी, then
The moment you find that if what are the grounds for removal of the trademark from the register, we will see that once there is a registration of the trademark, आपको trademark register हो जाता है, there are certain grounds कि आपके ट्रेडमार्क को रिमूव कर सकते हैं हम ट्रेडमार्क के रजिस्टर से। जो ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रार होते हैं वो ऑन विच ग्राउंड्स दे कैन रिमूव द ट्रेडमार्क। when there is a removal for failure to renew, when there is a failure to renew, then they can remove. When there is a request of the registered owner, अगर किसी ने रजिस्टर पहले से किया हुआ है और आपने रजिस्ट्रेशन के लिए दिया हुआ है, तो then they can remove the trademark from the register because there is an opposition. When there is a removal for failure to use, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप acquire कर लेते हैं rights को और आपने 5 years के which is a stipulated time, within that 5-year period of 5 years, you have not used your trademark, then also the registrar has a right to remove the trademark from the register. Cancellation on account of nullity. If a trademark consists of a sign that should not have been registered, उसने किसी ऐसे साइन को यूज किया जिसको रजिस्टर नहीं करना चाहिए, तो एट दैट अकाउंट आल्सो एंड गलती से वो रजिस्टर हो गया है, तो ऑन दैट अकाउंट ऑफ आल्सो द रजिस्ट्रार कैन रिमूव द ट्रेडमार्क फ्रॉम द रजिस्टर. रिमूवल ऑफ मार्क दैट हैज लॉस्ट इट्स डिस्टिंक्टिवनेस. अगर वो एक जेनेरिक हो गया, अगर आपका जो ट्रेडमार्क है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा आपने किसी प्रोडक्ट को किसी और प्रोडक्ट से, जो कंज्यूमर जो मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं, तब भी रजिस्ट्रार के पास ये राइट होता है कि वो उस ट्रेडमार्क को रजिस्टर से रिमूव कर ले बिकॉज इट हैज लॉस्ट इट्स डिस्टिंक्टिवनेस. सो with that, I think I've given you Devinder? You can stop presentation now. Yeah. Click on that stop presentation. Yes. Very nice. Yeah. So I think I've given you an insight about why it is important to have a trademark for any business enterprise. And I hope that the students or the people who are associated with me today in this lecture must have understood that what is the importance of a trademark, how it is associated with a goodwill, how it is associated with your brand name, how you can distinguish your thing with others, with the products which is already available, and why it is important that a person who's having an enterprise should go for a trademark. So if you have any queries, you can definitely ask me. Thank you, Dr. Suneet, for such a very informative session.
Hello. Dr. Suneet, are you there? In fact, we have lost connection here in the department, so I think there is a problem. Anybody who can respond to my voice? Am I audible to please? Yes, Arya. Can anyone respond to my voice, please? Anybody? Hello? Am I audible, please? Anybody from our regional centers is able to listen to me? सर आपकी आवाज आ रही है. I can listen to you at EMPC. हेलो, क्या किसी को मेरी आवाज आ रही है प्लीज? आवाज आ रही है. श्रवण कुमार जी, मिस्टर विनोद कुमार. अरे शर्मा जी, हेलो, हाँ नमस्कार. आपके इंटरनेट है? मेरी आवाज आ रही है? मैं बोल रहा था अभी, लेकिन मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही. चलो, कोई रिस्पॉन्ड नहीं. आर्या. Sorry, the connection was lost. Yes. Listen. हेलो In fact, हेलो. हाँ शर्मा जी, yes, Dr. मेरी आवाज आ Suneet. रही है आपको? Hello. हाँ. Yes. Now I think we. बोलिए. हाँ, मुझे आ रही है. अभी शायद इंटरनेट कनेक्ट भी हो गया. अभी लेट अस हाँ, जॉइन. मेरे ख्याल से आ रहे तो आ रहा था. मैंने सुमित का भी मतलब ज्वाइन किया था. हाँ, अब हुआ है शायद कनेक्ट, क्योंकि अभी Yes, फिर से आया था कि we lost internet join connection in करके. between. So, and this was, I think, जी, जी. for Suneet also. You also lost, Dr. Suneet, internet. Yeah, Yes, I lost the the connection. So, Thankfully, I completed the session. now we would like to conclude, but before that, if any of the participant or student, they have any question to be asked, because this was a very important topic when we are talking about the startups and entrepreneurship, then this particularly trademarking and getting it registered, why it is important and how to get it registered. These all aspects are very important to be understood. So you have very well explained, Dr. Suneet, all these aspects. We all know that different types of trademarks we see around us, different products, they are basically recognized by their trademark only.
you come to know about that product later, but when you see that trademark, then only recognize, yes, it is Nike or Adidas or McDonald or something, whatever product that is, they are recognized by their trademark. Even in case of IGNOU also, what Dr. Suneet had mentioned, when you see this logo of IGNOU having Jan Ka Vishwavidyalaya, immediately it comes to your mind that we are talking about the Indira Gandhi National Open University, who is having this kind of reputation, is having this kind of quality product in terms of study material and all those things. So that comes to our mind. So that's why whenever you are going for any business or startup, I think it becomes very important and also sometimes essential to get these basic things registered, maybe trademark, maybe if your product is having some the intellectual value, you need to get it patented. Those all aspects are very important, because there are many aspects, but today we try to focus on the trademark aspect only. And trademark is very important. When you start something, you want to make a mark, some standard mark that highlights about your product, about the quality of your product, about the benefits of product, about other features of your products. Immediately when somebody looks at your product, then these all aspects come to mind. So from that point of view, it was very important to understand why that trademark is important when you are venturing into a startup or business. And also Dr. Suneet has very well explained how to get that registered and in what situations it can be removed also, because you should be very careful that once you have taken trademark, it doesn't mean that it becomes your, I think, a lifelong right. Because if you are not using it the right way, if you are not using it for continuous time, then what I have understood, it can be removed also as per the rules. So these all aspects you have very well explained, Dr. Suneet. Really, we are very thankful to you for highlighting these the features and the processes and the benefits and advantage of trademark. But I would like to invite our participants also. Mr. Vinod, you would like to say something. I think you must have taken registered trademark. Have you got registered or not? Vinod Kumar is one of our students. So, सर अभी रजिस्टर्ड नहीं कराया मैंने, रजिस्टर्ड नहीं कराया हुआ ट्रेडमार्क। आपका कोई ट्रेडमार्क है कि नहीं है? नहीं, ट्रेडमार्क नहीं है सर। हाँ, आज के सेशन के बाद आप जरूर सोचिए, कहीं भी आप कोई अपना मग बनाते हैं, कोई पेंट करते हैं, कोई इसी तरीके का, तो वहां पे कहीं ना कहीं पता चलना चाहिए कि दिस इज ए प्रोडक्ट बाय द विनोद फर्म। आपकी फर्म का प्रोडक्ट है, वो कहीं पता चलना चाहिए, वो कहीं छोटा सा निशान हो, पता चला कि ये आपका प्रोडक्ट है। चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, चाहे वो आपकी टी शर्ट पे पेंटिंग हो, मग पे पेंटिंग हो, इनका बहुत अच्छा एक बिजनेस है। मिस्टर विनोद ही इज आवर स्टूडेंट एंड ही स्टेज इन चंडीगढ़। तो आज के सेशन से आई थिंक यू शुड टेक ए लेसन। आप एक बहुत अच्छा एक, जैसे लोगो भी कह सकते हैं, कोई और ट्रेडमार्क कह सकते हैं, कोई और अपना ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देखिए जो बहुत अच्छा हो, जो आपके प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हो, आपकी क्वालिटी के बारे में बात करता हो, जिसको देख के एकदम से पता चल जाए कि यस, ये विनोद का प्रोडक्ट होगा। जी सर, वैसे मैंने लोगो एक बना रखा है, उसको मैं वैसे अपने फ्लैक्स और होल्डिंग पे मैं उसको यूज करता हूँ। जैसे कोई कैंप वगैरह लगाता हूँ तो वहाँ पे मैं जो फ्लैक्स स्टैंड ही लगाता हूँ, उसके ऊपर मैं सबसे ऊपर टॉप पे लगाया हुआ है। और जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह के जैसे ज्वाइंट वेंचर होते हैं तो वहाँ भी मेरा लोगो लगता है, जो मैंने आकृति क्रिएशन के नाम से A और C एक बना रखा है ज्वाइंट सा। हाँ, तो उसको आज के सेशन के बाद थोड़ा और सोचिए, उसको कैसे जी जी बनाया जाए, कैसे यूनिक बनाया जाए, जी जी उसको लगाए कि यस, ये विनोद का ही प्रोडक्ट होगा, लोगों के जी जी एकदम से आ जाए उसको देखते ही। और फिर जब इतना अच्छा बन जाए तो उसको जरूर रजिस्टर कराइए। बिकॉज मैं डॉक्टर सुनीत की बात से ये मुझे लगा कि अगर आप उसको रजिस्टर नहीं कराएंगे और आपका प्रोडक्ट चलने लगा, कोई दूसरा आदमी उसको कॉपी करके और पहले रजिस्टर कराने के लिए जा सकता है। इसलिए आप जरूर करिए कि आप पहला अच्छा प्रोडक्ट अपना लोगो बनाइए या ट्रेडमार्क बनाइए, अच्छे किसी ऐसे आदमी को कंसल्ट करिए अपने हिसाब से देखते हुए, एंड देन उसको रजिस्टर जरूर कराइए। रजिस्ट्रेशन में सुनिए क्या फीस का क्या होता है, कितनी फीस लगती है, कैन यू प्लीज हाईलाइट अबाउट दैट, फीस वगैरह कितनी होती है? जो एक्चुअली फीस बहुत ज्यादा नहीं है,
लेकिन सिंस इट डिपेंड्स अपॉन द वेंचर, इंडिविजुअल की तो फीस हमेशा कम ही होती है। अगर आप किसी कंपनी एंटरप्राइज की बात, इंडिविजुअल हैं और आप रेन्यू कराने, आई मीन रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं, तो आपको आपकी फीस कम रहेगी। लेकिन जिस तरह हिसाब से आपकी कंपनी है, अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो उस हिसाब से फीस लेते हैं। तो फीस इज ऑलवेज वेरी नॉमिनल, नॉट वेरी हाई। एग्जैक्टली तो मैं आपको अभी नहीं बता सकती, क्योंकि आपको रजिस्टर जो कॉपीराइट का जो ऑफिस है, वहीं पे ट्रेडमार्क का भी ऑफिस है। द रजिस्ट्रार इज द सेम, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रार सेम होते हैं। तो विजिट इन द्वारका एंड यू कैन फाइंड आउट दैट व्हाट इज द फीस। अच्छा, एक चीज और बताइए, लेकिन जैसे कि दिल्ली में तो नेचुरली होगा ही होगा इसका ऑफिस, इसके अलावा और कहाँ किन शहरों में चंडीगढ़ में भी है क्या इसका रजिस्ट्रेशन ऑफिस? अगर मान लो मुझे अपना इस प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड कराना हो, ट्रेडमार्क को, तो क्या चंडीगढ़ में पॉसिबल है? एक्चुअली क्या है सर कि ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट ऑफिस जो है वो 4 ही हैं, और आपके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस हैं उसमें, कि जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली और बहुत सारे अदर स्टेट्स हैं। आई कैन नॉट टेल यू ऑल द स्टेट्स, बट द नियर बाय स्टेट्स लाइक हरियाणा है और राजस्थान है, इन सब स्टेट्स का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है वो दिल्ली है। तो वो दिल्ली में आकर के रजिस्टर कर सकते हैं। क्या इसी इसमें तरीके से ऑनलाइन ऑनलाइन प्रोसीजर भी है कि जैसे मान लो सपोज करो कि थोड़ा म्यूट करिए। क्या कोई ऐसा पॉसिबिलिटी है कि मान लो जैसे चंडीगढ़ में रहते हैं और चंडीगढ़ में अगर ऑफिस नहीं है, तो क्या ऑनलाइन भी उसको रजिस्टर कर सकते हैं? कुछ इस तरीके का पॉसिबिलिटी है क्या? एक्चुअली अभी ऑनलाइन के बारे में तो आई डोंट नो मच आप अबाउट इट। देखिएगा थोड़ा सा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे स्टूडेंट्स को ये काफी जरूरत पड़ती है जानने के लिए कि, क्योंकि एक तो बहुत अच्छा हुआ आज के सेशन से, जो हमें यूट्यूब या फेसबुक लाइव भी देख रहे होंगे, दे मस्ट हैव अंडरस्टूड कि ट्रेडमार्क की इंपॉर्टेंस क्या है, कितने तरीके के ट्रेडमार्क हो सकते हैं, क्या क्या होते हैं, वो सब उनको समझ में आया होगा, और इसको कैसे कराया जाए वो एक ब्रीफ प्रोसेस हमने देख लिया। लेकिन मैं आपसे एक थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा पर्सनल, बिकॉज यू काइंडली प्रिपेयर ए 1 पेज राइट अप ऑन द प्रोसेस, पहला क्या करना है और कहाँ पे हो सकता है, सो दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सुजाता टू ब्रिंग इट इनटू आवर इनोवेट न्यूज़लेटर। और वो इनोवेट न्यूज़लेटर हमारा जाता है स्टूडेंट्स के और बाकी के पास में भी, उसमें इंफॉर्मेशन होगी, तो विल दे गेट फ्लो ऑफ द प्रोसेस कि कैसे कैसे क्या क्या करना है और कहाँ हो सकता है। और अगर उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज जैसे आपने कहा कि 4 ही जगह है इंडिया में, तो बड़ा डिफिकल्ट पड़ता होगा कि अगर किसी के लिए 200-300 किलोमीटर दूर है तो जाना, फिर उसके लिए रजिस्टर कराना, तो कई बार इतना लोग नहीं लेना चाहते हैं पेन, देन प्रॉब्लम होती है, वो फिर उसे कंटिन्यू करते हैं जैसे चल रहा है। बट हम ये चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली आई हैव विद अस some of our mentee institutes, because मैं आपको बताना चाहता हूँ कि IGNOU is mentoring some of the other institutes also in context with innovation and startup entrepreneurship. So I think we have with us from Kurukshetra University, am I right, somebody from University Institute of Engineering Technology, is that Dr. Piyusha is there from one of our mentee institute. So they also will be learning कि कैसे, क्योंकि इनके सामने भी वही प्रॉब्लम होगी, इनके स्टूडेंट तो कैंपस बेस्ड स्टूडेंट्स हैं, उनको जरूरत पड़ती है कि वो कैसे हम ये रजिस्टर कराएं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स नाउ दे आर कमिंग फॉरवर्ड टू सेट अप देयर स्टार्टअप्स एंटरप्राइजेस। और पहला स्टेप मुझे लग रहा है कंपनी रजिस्टर कराने के साथ साथ ये होता ही है कि लोगो कराओ या कोई ट्रेडमार्क कराओ। अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसके बारे में ये ट्रेडमार्क होगा तो अच्छा रहेगा, कंपनी है तो नॉर्मली लोगो की बात करते हैं, तो इफ दैट इज रजिस्टर्ड तो वो कम से कम उनको रहेगा कि दे ओनरशिप, यस आई ओन समथिंग। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा इन फ्यूचर इफ यू कैन डू दैट फॉर अस, सो वी वुड लाइक टू पब्लिश इट इन आवर न्यूज़लेटर इनोवेट। So with that, any other query or question or observation from our participants, please? जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए उनमें से कोई कुछ और कुछ अपना कमेंट्स देना चाहते हैं? Dr. Piyusha, you are there? So I think there is no observation or comment or question. So Dr. Sujata, we can bind up today's session with thanks to Dr. Suneet for taking such a informative and wonderful session.
Thank you, Dr. Sharma. Now I would formally conclude the session. And first of all, I would like to thank Dr. Suneet Srivastava, the expert of today's session, for joining us, sparing her valuable time with us, and sharing such significant information for the students. We have learned a lot about trademarks today. Dr. Sharma, it seems. Yes, I can see Piyusha wants to say something. Dr. Piyusha, you are welcome, please. Yeah, please. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon and welcome. Thank you so much, sir. So, sir, there was some issue in the network connectivity, so I was not able to respond earlier. Yes, And however, due to some pre-engagements over here, we are having events continuously in our university. I was not able to join on time. I'm very much late to join the session and apologize for the same. And secondly, I would like to thank IGNOU for giving us opportunity to get connected to this IPR session of yours. And taking this platform as an opportunity, I would like to invite you. In the next week, we are celebrating IPR week in our university. And we'll be having sessions starting from 25th of April till 29th April. And this event is sponsored by PSCST, DST Government of Chandigarh, Punjab State Council of Science and Technology. And on 27th and 28th, we'll be having our experts from outside in the university. So I would like to request IGNOU as well. I'll be sharing this has been arranged in a very short time. Only yesterday we got the proposal from the PSCST, approval for our proposal of organizing this IPR day. So I'll be sending the invitation, sharing it with OP Sharma sir, and I invite the entire team of IGNOU of IIC if they could make it and please visit our campus for the event. Thank you very much. We would like to see how it is possible. If possible. Thank you so much, sir. So, yes. Good. Thank you, Dr. Piyusha. Thank you, ma'am. Thank you so much. Yeah. So as I was saying that in today's session, we have learned a lot about trademarks, how trademarks are a great asset for any company or business. And in context of startups and entrepreneurship that we are talking about, we are taking it so seriously today, it becomes all the more important. And it also helps to create a brand recognition and helps the innovators to avoid any kind of legal issues that may arise in future. So thanks a lot, Dr. Suneet, for such an enlightening session that we had today. And I would also like to thank the directors of schools, heads of divisions, centers, and units who joined us for today's session. I thank regional directors of IGNOU and faculty members and colleagues of IGNOU, colleagues from different RCs spread across the country who have joined us. I thank my colleagues, Dr. Josna Dikshit and Dr. Momita Das for today's session. I also thank the staff members at NCID, Pawan and Praveenji, who are at the back supporting us. And finally, last but not the least, I thank our director, Dr. OP Sharma, who has been a consistent support, a guiding pillar behind these sessions. So thanks a lot, Dr. Sharma. And once again, I thank you all for sparing your time and joining in. Thanks a lot. So, thank you, Sujata. Thanks. Thank you. Thank you very much to all of you. Namaskar. Can conclude today's session. Thank you. Thank you. Thank you, everyone.